So what does the Bronsted-Lowry theory say? According to the Bronsted-Lowry theory, an acid is a proton donor, a base is a proton acceptor. दोनों में फर्क है। Arrhenius theory कहते हैं प्रोड्यूस होंगे हाइड्रोजन प्लस आयंस और प्रोड्यूस होंगे OH माइनस आयंस। यहाँ पे है कि एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो कि आपके आईजीसीएसई की थी डेफिनेशंस थी। बोथ ऑफ दीज वर यूज्ड आईजीसीएसई एज वेल। और अभी भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो यू वुड बी राइटिंग द डेफिनेशन दैट एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, अ बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। क्योंकि हुआ क्या था कि जब HCl और NH3 का रिएक्शन हुआ तो NH4Cl बन गया था, लेकिन उधर हुआ है क्यों? उन्होंने कहा कि हमने जब NH3 को रिएक्ट किया किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। नाउ वन ऑफ दीज इज अ बेस एंड वन ऑफ दीज इज एन एसिड। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन आपके पास हाइड्रोजन आयंस और OH आयंस प्रोड्यूस होने चाहिए थे, नहीं हुए। हुआ क्या, प्रोड्यूस हो गया जनाब NH4Cl। फिर हमने ब्रोस्टेड लॉरी थ्योरी से देखा कि एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, कि इसने अपना प्रोटॉन दे दिया किसको, NH3 को। NH3 को दिया तो NH3 NH4 बन गया बिकॉज NH3 वाज अ बेस एंड इट इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो NH3 के पास 3 हाइड्रोजन थे, अब एक और हाइड्रोजन आ गया। सो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी दिस इज आल्सो एन एसिड बेस रिएक्शन एंड इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि H प्लस और OH आयंस ही बने। So a proton can also be written as a hydrogen ion, which is H plus. For example, when hydrogen chloride dissolves in water to form hydrochloric acid, the following reaction occurs. HCl plus H2O forms H3O and Cl minus. तो यहाँ पे क्या हुआ है? The Cl minus HCl was a proton donor. उसने donate कर दिया H2O को. And H2O was a proton acceptor. उसने accept कर लिया. So HCl is acting as an acid because it has donated a proton, and H2O is acting as a base because it has accepted a proton. तो HCl के पास जो H था वो उसने H2O को दे दिया। अब HCl के पास पीछे क्या बच गया, सिर्फ Cl। और जो H2O को एक H मिला था because it was an acceptor, H2 से H3 बन गया वो। So when the acidic solution reacts with a base, what is actually functioning as an acid is the hydroxonium ion H3O plus. So here you can see that the H3O plus को अगर हम इंडिविजुअली देखें तो अगर हम उसको दोबारा एक वो प्रोटॉन डोनेट कर दें तो वो क्या बन जाएगा, 2H2O. So what has basically happened, the proton was transferred and in this case we call the proton as a whole hydrogen ion। एक पूरा हाइड्रोजन आयन जो था वो एक जगह से दूसरे मॉलिक्यूल में चला गया to the lone pair. So H3O is acting as an acid because it has donated a proton, and OH is now acting as a base because it has accepted a proton। तो proton donor proton acceptor का एक आइडिया होना बहुत जरूरी है। एंड यू कैन सी बाय द नंबर ऑफ H कि इसने अपना H डोनेट कर दिया टू H2O और उसने H एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज इट वाज एन प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन डोनर H देगा विच आर एसिड्स एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन ले लेगा बिकॉज इट इज a base। So the Bronsted-Lowry acids and base do not have to involve aqueous equations। aqueous solutions वगैरह इसमें involved नहीं होते, तो आपके पास gases हैं और liquids होते हैं।